हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। आज हम बात करेंगे अबाउट द हाइपोथैलेमस। दिस इज द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वी विल बी डीलिंग विद। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? पहले मैं बात करूंगा हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट्स द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज द न्यूक्लियस? अ न्यूक्लियस is a group of nerve cell bodies within the central nervous system. ठीक है? So hypothalamus is the part of central nervous system and it is composed of a number of nuclei, ठीक है, which are the groups of nerve cell bodies within the central nervous system, and it has an important role in the interconnection between the nervous system and the endocrine system. ठीक है। सो हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। और हम नर्वस सिस्टम में इसकी, जब हम नर्वस सिस्टम में इसको पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। और इसका बहुत रोल है इन वेरियस प्रोसेस लाइक द बायोलॉजिकल क्लॉक, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, स्लीप वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा रोल है इन द नर्वस सिस्टम। तो हम यहां पे फोकस करेंगे सिर्फ इसका रोल इन द एंडोक्राइन सिस्टम। So, पहले मैं बता दूं that the hypothalamus is the part of the brain or the central nervous system, ठीक है, ये आपको पता है अब। और इसका origin क्या है? Because the brain, इसका origin itself it is originated from the ectoderm. So hypothalamus इसका जो origin है, the hypothalamus has been derived from the ectoderm. ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला point, the origin of hypothalamus, like the origin of the rest of the part of the central nervous system, it is from the ectoderm germ layer, जो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डायग्राम ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस कहां है? दिस रेड पोर्शन इज द हाइपोथैलेमस। तो ये कहां पे है? सो द हाइपोथैलेमस इट इज इन द ब्रेन। वेयर? इट इज इन द फोर ब्रेन, ठीक है। इट इज इन द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कहां है? फोर ब्रेन का पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द डायनसेफेलॉन, ठीक है। सो इट इज इन द डायनसेफेलॉन, लेकिन डायनसेफेलॉन में कहां है? रूट पे है कि फ्लोर पे है? इट इज ऑन द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज फाउंड इन द फोर ब्रेन एंड इट इज फाउंड इन द डायनसेफेलॉन एंड इट इज फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन, ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है, वहां पे पढ़ेंगे, यहां पे मैं बताऊंगा। सो इट इज बिलो द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और इसको हाइपोथैलेमस क्यों कहते हैं? हाइपो मीन्स बिलो, सो इट इज बिलो टू व्हाट? थैलेमस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स बिलो एंड थैलेमस इज हियर। सो दिस स्ट्रक्चर, दिस राउंड स्ट्रक्चर इन द डायनसेफेलॉन इज द थैलेमस and the structure below the thalamus is the hypothalamus. That's why it is known as the hypothalamus. So in short, the hypothalamus is present in the brain, in the forebrain, in the diencephalon, and on the floor of the diencephalon below the thalamus. And above this gland, this is the pituitary gland. So pituitary gland के ऊपर hypothalamus है और thalamus के नीचे hypothalamus है, ठीक है। This is the location of the hypothalamus. और इसके बाद हम बात करेंगे, so hypothalamus की लोकेशन में आप याद रखेंगे, it is on the floor of diencephalon. It is on the floor of diencephalon below thalamus. I am trying to write bold today, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे about the size of hypothalamus. The size of hypothalamus is in human beings is around the size of an almond, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, हाइपोथैलेमस का साइज बहुत ही छोटा है, इट इज ऑफ द साइज ऑफ एन आलमंड इन ह्यूमन बींग्स, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस में आप याद रखेंगे, मैं आगे भी बताऊंगा। हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ, ये आपको याद रखना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। व्हाट इज द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज, ठीक है। से दीज आर द नर्व सेल बॉडीज, इनका ग्रुप, और ये है इनके फाइबर्स, ठीक है। सो मैं फाइबर्स को नहीं काउंट करूंगा, मैं सिर्फ ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज को काउंट करता हूं। इफ द ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज इज फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। And if the group of nerve cell bodies is found in the peripheral nervous system,
इट इज नोन एज अ गैंग्लियन, या आप यहीं पे याद रखेंगे. सो हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लिय और द ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल बॉडीज. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लिय आप याद रखेंगे, ठीक है. सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लिय है. आर्क्वेट न्यूक्लियस है, ठीक है. प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है. हम हाइपोथैलेमस को और करीब से देखेंगे तो दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लिय, ठीक है. सो ये जो न्यूक्लिय है, द हाइपोथैलेमस इट हैज अ स्मॉल स्टॉक, ठीक है. इट इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट्स द हाइपोथैलेमस विद दिस ग्लैंड विच इज नोन एज ए पिट्यूटरी. सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक स्टॉक है. तो ये स्टॉक है क्या? जहां हमारे न्यूक्लिय है इन द हाइपोथैलेमस, इन न्यूक्लिय से बहुत सारे एक्सॉन निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं. And some of the fibers they pour their secretions here, ठीक है, here, and then the blood carries those secretions to this gland or pituitary gland. So this stalk it is composed of number one, this the blood vessels, and number second this stalk it is composed of some of the nerve fibers. कुछ fibers आते हैं कुछ न्यूक्लियस से, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इनसे कुछ फाइबर्स आते हैं वो सीधे चले जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ the pituitary. So these nerve fibers also form the part of the stalk, ठीक है. तो स्टॉक में दो चीजें हैं, एक तो ब्लड वेसल्स हैं, दूसरे नर्व फाइबर्स हैं. So the blood vessels they are a part of hypothalamo hypophyseal portal system. ये आप यहीं पे याद रखेंगे. Hypothalamo means hypothalamus. Hypophyseal. Hypophysis means pituitary. Portal system. आपको पोर्टल सिस्टम का आइडिया होगा, मैं ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है. सो यूजुअली क्या होता है, एक ऑर्गन में आर्टरी चली जाती है, वहां पे आर्टीरियोल्स बनते हैं, फिर वो कैपिलरीज बनती है, फिर वेन बनती है, ठीक है. वेन ऑर्गन से निकलती है, ठीक है. वेन बनने से पहले दीज कैपिलरीज दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूज. उसके बाद वो ज्वाइन होते हैं, दे फॉर्म द वेन. जैसे एक रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है, ठीक है. तो दीज वेन दे लीव एन ऑर्गन. लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्हेन द वेन लीव्स एन ऑर्गन इट अगेन डिवाइड्स इनटू द वेन्यूज एंड दे फॉर्म द कैपिलरीज. And again they unite into the venules and again they form a vein. So the vein that forms the venules and then capillaries in some other organ or at a place and then forms again the capillaries and venules. This system is known as a portal system. So hypothalamo hypophyseal portal system forms a part of the stalk. क्यों, कैसे? जो hypothalamus में न्यूक्लिय हैं, they pour their secretions which are known as the neurohormones into the blood, which is a portal system, which forms a portal system here, and this blood it goes to the pituitary, ठीक है, because the hormones are poured in the vein made up of the hypothalamo hypophyseal portal system. और इसके अलावा इस स्टॉक में क्या है, this stalk also contains the nerve fibers जो इन न्यूक्लियस से निकलते हैं. One is the paraventricular nucleus, other is the supraoptic nucleus, and these nerve fibers they go directly into the posterior pituitary. These nerve fibers also form a part of the stalk, and these nerve fibers they are known as hypothalamo hypophyseal nerve tract, ठीक है. So the hypothalamus it is composed of a number of nuclei and it has a stalk that joins it with the pituitary gland. The hypothalamus contains the nuclei. These nuclei they pour their secretions in the blood, which is the hypothalamo hypophyseal portal system, and this portal system carries these hormones to the anterior pituitary, and it also contains some of the nerve fibers which are known as the hypothalamo hypophyseal tract into the posterior pituitary. So they form the part of the stalk, and here we have the pituitary gland, ठीक है. Made up of the hypothalamo hypophyseal portal system. और इसके अलावा इस स्टॉक में क्या है, this stalk also contains the nerve fibers जो इन न्यूक्लियस से निकलते हैं. One is the paraventricular nucleus, other is the supraoptic nucleus, and these nerve fibers they go directly into the posterior pituitary. These nerve fibers also form a part of the stalk, and these nerve fibers they are known as hypothalamo
hypophyseal nerve tract. ठीक है. So the hypothalamus, it is composed of a number of nuclei and it has a stalk that joins it with the pituitary gland. The hypothalamus contains the nuclei. These nuclei, they pour their secretions in the blood, which is the hypothalamo-hypophyseal portal system, and this portal system carries these hormones to the anterior pituitary, and it also contains some of the nerve fibers which are known as the hypothalamo-hypophyseal tract into the posterior pituitary. So they form the part of the stalk, and here we have the pituitary gland. ठीक है. बात करेंगे अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द हाइपोथैलेमस. जैसा कि मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लिय, और जो न्यूक्लिय हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशल न्यूरॉन्स व्हिच आर नोन एज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. पिछले लेक्चर में बोला है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और द न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स, दे आर द सेल्स व्हिच प्रोड्यूस द न्यूरोएंडोक्राइन हार्मोन्स और द neurohormones. ठीक है. And these neurosecretory cells in the hypothalamus are modified nerve cells, and these neurosecretory cells in the hypothalamus are of two types. ये आप याद रखेंगे, parvocellular neurosecretory cells and magnocellular न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. कम से कम आप हिस्टोलॉजी में इतना याद रखेंगे. सो मैंने बताया हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिय. न्यूक्लिय आर द नर्व सेल बॉडीज ऑफ स्पेशल न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस, and these nuclei are composed of neurosecretory cells or neuroendocrine cells, and there are two types of neuroendocrine cells in the hypothalamus. One is the parvocellular neurosecretory cells and the second type is the magnocellular neurosecretory cells. ठीक है. अब हम बात करेंगे अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस. ठीक है. जैसा कि मैंने बोला द हाइपोथैलेमस इट कंटेन्स a number of nuclei, and these nuclei contain the neuroendocrine cells, and the neuroendocrine cells are of two types, magnocellular and parvocellular neuroendocrine cells. And these neuroendocrine cells, they produce hormones which are known as neurohormones. पिछले लेक्चर में मैंने बोला है. ठीक है. So neurohormones of the pituitary are of two types. Those neurohormones which are poured directly into the blood, ठीक है, in the hypothalamo-hypophyseal portal system, ठीक है, and those neurosecretory hormones or neurohormones which are sent from the nuclei in the hypothalamus directly into the posterior pituitary gland through the hypothalamo-hypophyseal nerve tract. ठीक है. कुछ न्यूरोहॉर्मोन्स ब्लड में पोर होते हैं और वो चले जाते हैं कहां, इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, और कुछ न्यूरोहॉर्मोन्स ऐसे हैं which are not poured into the blood but are taken by the long nerve fibers or axons into the posterior pituitary. So the former type of neurohormones, they may be of two types. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट टाइप इज द रिलीजिंग हार्मोन एंड द सेकंड टाइप इज द इनहिबिटिंग हार्मोन, एंड ऑल दिस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स दे गो टू द एंटीरियर पिट्यूटरी मेनली. ठीक है. They go to the anterior pituitary through the hypothalamo-hypophyseal portal system. That means they are carried by the blood into the anterior pituitary. और मैं बात करूंगा those two neurohormones, important neurohormones, which are produced by the paraventricular nucleus and supraoptic nucleus and are sent to the posterior part of pituitary gland through the nerve cell tract. They are sent through hypothalamo-hypophyseal nerve tract into the posterior part of pituitary for their storage. They are the oxytocin and the vasopressin. ठीक है. ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. लेकिन हम इन हार्मोन्स को, इन दो पर्टिकुलर हार्मोन्स को हम हाइपोथैलेमस के साथ नहीं पढ़ते. वी डोंट स्टडी देम अंडर द हेड हाइपोथैलेमस. व्हाई? बिकॉज फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी उनका ट्रांजिट है थ्रू द नर्व एक्सॉन्स, थ्रू द नर्व सेल फाइबर्स एंड नॉट थ्रू ब्लड. एंडोक्राइन हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? दे आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड दे आर कैरिड टू द डिस्टेंट प्लेस थ्रू ब्लड. क्योंकि ये पोस्टीरियर
पार्ट ऑफ पिट्यूटरी में जाते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, बट नॉट थ्रू ब्लड. दे आर ओनली रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, synthesized in the hypothalamus, sent to the posterior pituitary through the axons and stored there. And from the posterior pituitary, they are released into the blood. Since they are released into the blood from the posterior pituitary, we deal these hormones under the posterior pituitary and not hypothalamus. ठीक है, I hope आपको ये समझ आया. Hypothalamus is composed of a number of nuclei. ठीक है, बिकॉज हमें हाइपोथैलेमस पढ़ना है एज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे. मैं आपको ब्रीफली आइडिया दूंगा अबाउट some nuclei in the hypothalamus, some important nuclei in the hypothalamus. So this is the structure of the hypothalamus. You know that below the hypothalamus we have the pituitary gland. ठीक है, pituitary gland, it is then connected to the upper part, that is the hypothalamus. ठीक है, आप याद रखेंगे this is optic chiasma. ठीक है, हम optic chiasma से start करेंगे. We have a supraoptic nucleus here. It is a very important nucleus and इसका रोल है, मैं इनका रोल बता रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नर्वस सिस्टम. मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं. ठीक है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस का रोल है इन वाटर बैलेंस. ठीक है, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस है यहाँ पे, इसका रोल है बायोलॉजिकल क्लॉक. ठीक है, वी हैव द मीडियल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस हियर, जिसका रोल है ब्लड प्रेशर में. वी हैव द एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया विच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. We have the paraventricular nucleus which has an important role in the water balance and stress management. ठीक है, we have the lateral hypothalamic area जो इसकी साइड में है. We have the dorsal hypothalamic area. We have the dorsomedial nucleus. We have the ventromedial nucleus. These two nuclei are also important because DM and dorsomedial nucleus, it has a role in GIT activities, and the ventromedial nucleus, it has a role in satiety. ठीक है, the satisfaction you feel after you eat something. And we have the mammillary body which has a role in feeding. ठीक है, these are some of the important nuclei of the hypothalamus.